Good morning, students. Welcome to Commerce Canpit Odisha. Today we'll start with the holder portion. Holder in due course and the other things in the negotiable instrument. Holder meaning हमें introductory part हिसाब रे देखी थिरु. Holder exact meaning कौन देखो? The holder of a promissory note, bill of exchange or check is any person entitled in his own name to the possession thereof and to recover the amount due thereon from the parties thereto. कौन बुझी पारे थे? कौन बुझी पाला? जनरली होल्डर माने कौन? होल्डर ऑफ मोबाइल फोन माने कौन रे? जोड़ा होल्ड करके रखी थिबो माने मोबाइल फोन ता पोजीशन रे थिबो को पर्टिकुलर एंटिटी रो पोजीशन रे दैट इज होल्डर. तो इन द सेम वे आमे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हिसाब रे जतरो देखुछु से तीनटा बेसिक पॉइंट आपको कहले रे. होल्डर रे तीनटा बेसिक पॉइंट हमको कहला से कहै छी कि होल्डर ऑफ ए प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक in his own name is any person entitled in his own name to the possession thereof. First point कौन कहै छी? First point कहै छी कि entitled in his own name. Entitled in his own name. माने एडी हमें दीडा जिंस बुझिया दरकार. जदि मु जण को असाइन करछि किछि प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज तो आई एम राइटिंग इट ऑफ. तांको नारे मु सेटा लिखि कि दोछ कि दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज दिस पर्टिकुलर राइट कहिबी हैला. एडार मीनिंग होछ कोन एंटाइटल्ड टू हिज ओन नेम. जदि एमिति करबी तो मो जाब देइथिबी से मते रिक्वेस्ट करथियो कि तमे ए पर्टिकुलर पर्सन रो ना लिखि दियो तो से केस रे मो से पर्सन रो ना लिखि देबी. सेमिति टाइम कहि कोन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम कहबी. तो अल्टीमेटली होल्डर माने होची जा ना रे से लिखिबो जे होल्ड करगी रखिथिबो. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट होची से देखो receives or receives or recovers the amount due. Receives or recovers the amount due. Receives or recovers the amount due. Where the note, bill or check is lost or destroyed, its holder is the person so entitled at the time of such loss or destruction. एडा होची सबसे important but holder रो केस रे कोन एडा होची स्टार मार्क कर दिया हमती. when the instrument is lost or destroyed, when the instrument is lost or destroyed, holder किया होगा एडी. holder in this case is the person. Holder in this case is the person who has the instrument immediately before it was destroyed. एटा होचे हमर इंपोर्टेंट पॉइंट हैला. से कोइ जति किछि इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रॉय हेला, लॉस्ट हेला कि आ किछि जिंस हेला तो इंस्ट्रूमेंट रो होल्डर के आले हमें कहि परिबा द पर्सन हु इज हैविंग द इंस्ट्रूमेंट इमीडिएटली बिफोर इट वाज डिस्ट्रॉयड. खराब हेबा आगरे किंबा हजिबा आगरे जा पाखर थिला के होच तारो होल्डर. बुझी पालो? दीस आर द थ्री थिंग्स से बेसिकली कहि. तापरे कोन हमर केस लरे से कोन कहिथिला? It was held that the term holder as defined in section 8 of the act includes a person who, though in possession of the instrument, had no right to recover the amount due from the parties thereto, such as the finder of a lost instrument payable to bearer, or a thief in possession of such instrument, or even the payee himself he is prohibited by in order of the court from receiving the amount due from the instrument. तो अल्टीमेटली आमे गुटे जिंस कंक्लूजन बाहर करथिलु
कि होल्डर डज नॉट इंक्लूड द फाइंडर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जाग मिली जाईची सी होल्डर वाली हमें कहि परियानी। अच्छा हमको ये जिनसटा पूरा पूरी एविडेंटली क्लियर हे जाउची हम जतो डेफिनेशन दा ब्रेक कर डेफिनेशन ब्रेक करला को वी गॉट प्रीडोमिनेंटली थ्री इंपोर्टेंट एलिमेंट्स कोन कोन कहिची ता ना रे सेडा हेथिबा दरकार। सेकंड थिंग होची से एक अमाउंट रिकवर करबा माने लाइक हेथिबार अछि ताकू तमे राइट देथिबो कि से अमाउंट से रिकवर करि परियो। द थर्ड थिंग इज जेतलो किछि डिस्ट्रॉय हेयला द पर्सन इमीडिएटली हैविंग इट इज कॉल्ड एज अ होल्डर जागो मिलिछि सीए नाही। तो आमे जेतलो ए तीनटा पॉइंट भल से मन रखिछु तो सी केस लॉ क्वेश्चन टा आराम से हमरो सॉल्व हो जिवो। केस लॉ भितर से कोन कहिछि हमको होल्डर डज नॉट इंक्लूड फाइंडर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रास्ता रे जदी काहो मिलि जाईछि तो से मेयरली किछि भी होल्डर हे पारिबोनी। अ लीगल हेयर कैन क्लेम द डेट ओनली इफ ही हैज द सक्सेशन सर्टिफिकेट माने कोन जदी जणा पाखरे अछि होल्डर होची मिस्टर ए होल्डर होची कोन मिस्टर ए ता पाखरे गुटे चेक टे थिला तो ए जो कोन हला 20th अगस्त रे डेथ हे गला 20th अगस्त रे तो चेक टा केतोला आस्थाना ताको 30th अगस्त रे आसे थांदा। तो ए केस रे कोन हबो ना लीगल हेयर जे भी अछि बी होची तार लीगल हेयर तो लीगल हेयर केतोल को से चेक टा क्लेम करबो ना जेतोल को बी गुटे सक्सेशन सर्टिफिकेट माने आरो पुओ गइगिरी गुटे सर्टिफिकेट जहां भी प्रूफ वगैरह देखेबो सेतोल आगे से कोन क्लेम करि परबो। एडा होची हमरो सेकंड केस वेरी इंपोर्टेंट थिंग्स हियर बुझी पाला। एंटायर कंक्लूजन टा लिखि देली आउ तो तुम पढिया दरकार बुझिला होल्डर रो जिंसडा क्लियर डाउट किछ अछि नाही फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर रो मीनिंग तो बहुत भल से बुझिलो होल्डर इन ड्यू कोर्स माने कोन फॉर द टाइम बीइंग ड्यू कोर्स माने कोन फॉर द टाइम बीइंग लिखि पारियो से ऊपर फॉर द टाइम बीइंग for the time being. Section 9 defines the term holder in due course. Ko section kochi na section 9 kochi. It means any person who for consideration becomes the possessor of the promissory note, bill of exchange or check if payable to bearer or the payee or the endorsee thereof if payable to order before the amount mentioned in it become payable and without having sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person from whom he derived his title. The holder in due course रा important elements कौन कौन एग्जाम आगरे तमे इनदी ब्रेक करिकी पढला त मुंड तिर जीव पॉइंट वाइज करिकी आगा मन रखि पारियो तो पैराग्राफ वाइज अछि तमे टेबल से मन रखि पारियो। होल्डर इन ड्यू कोर्स रे फर्स्ट थिंग होची तमे देखिबो से पर्टिकुलर पर्सन जे भी अछि तारो से इंस्ट्रूमेंट प्रति आ किछि भी राइट नै से खाली रखिथिबो से जिंसडा बट ता ऊपर किछि राइट नै कि तारो किछि भी माने लीगल लायबिलिटी किछि हेले नै सेथरे। तो ये कोन जदी सिमती किछि नै तो ये कोन हेछि ना द पर्सन who for consideration person who for consideration becomes the temporary owner or possessor of the instrument temporary owner or possessor of the instrument। तापर देखो से कोन कहछि एते पर्यंत हमर हला गुटे पॉइंट से कहछि सेडा प्रॉमिसरी नोट हे पारियो बिल ऑफ एक्सचेंज हे पारियो चेक हे पारियो जहां भी इफ पेएबल टू द बियरर और टू द पे और टू द एंडोर्सी तो एडा कहा को पेएबल हबो पेएबल टू बियरर माने म कोन कहिथिली जार राइट अच्छे से अमाउंट रिसीव करिया पई बुझी पाछो तो कंफ्यूज होबनी बिल्कुल भी बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जे ओनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सियाले हमें कहि परिया क्लियरली कहि परिया एडी मु सेति पे लिखि देखो टेम्पररी ओनर माने कोन से खाली टेम्पररी बेसिस पे से इंस्ट्रूमेंट रो ओनर
ना कि से माने जहां भी अमाउंट अच्छे ता ऊपर किछि हक अच्छे तार किछि भी हक नहीं तो के रिसीव करियो पेएबल टू बियरर सेकंड पॉइंट से कोन कहछि पेई और एंडोर्सी पेई माने के एंडोर्सी माने जे इंस्ट्रूमेंट टा रिसीव करियो नहीं इंस्ट्रूमेंट टा कोन करथिया से होल्ड नहीं एंडोर्सी माने के एंडोर्समेंट माने कोन कहिथिले मु वेरी गुड ट्रांसफर करिवार से मझिरे जे अछि हैला तो जहां भी पॉइंट एडी से कहूची पेएबल टू बियरर पेई और एंडोर्सी तीनटा जिंस से कहिची तो के कोन पेएबल करियो बुझी पारछ ना तमे होल्डर इन ड्यू कोर्स जे भी अछि से पेमेंट करियो ए तीन जण भीतर काओ गुटे से पेमेंट करियो ए तीन जण भीतर काओ गुटे बुझिला ना सी हैंडल करछि से इंस्ट्रूमेंट ता सी कार्ड किछि रिसीव करिकि किबा कार्ड किछि रिकवर करिकि काहा को दबो एदर ए तीन जण भीतर काहा को जण को दबो तो पेएबल टू माने कोन होल्डर इन ड्यू कोर्स ता पेएबल करूछि एदर बियरर को पेई को नले एंडोर्सी को से पॉइंट से कहनी बट हमें ब्रेक करके बुझिबा दरकार क्लियर एब्सोल्युटली क्लियर देन देखो इफ पेएबल टू ऑर्डर जदी एडा नॉर्मली पेएबल हेला से पेएबल रे दीटा कैटेगरी करला पेएबल टू ऑर्डर हेले कोन हबो इफ पेएबल टू ऑर्डर हेले कोन हबो बिफोर द अमाउंट मेंशनड इन इट बिकेम पेएबल जदी पेएबल टू ऑर्डर माने जे भी अछि ए होल्डर इन ड्यू कोर्स दीटा जिंस कंफर्म करबा को पड़िबो दीटा जिंस एसेटेन किंबा कंफर्म करबा को पड़िबो से कोन कहूची before the amount mentioned in it payable and without having sufficient cause to believe हैला first thing होची किछि भी clarity in the amount mentioned before payment date एटा पूरा पूरी नोआ पॉइंट मु कोन पे लिखोची कोची before पेमेंट डेट एकदम जानिबा को दरकार कि ताको केते अमाउंट से रिकवर करिवार अछि से कहयानी कि मु जति के उधार अछि तू टिके ताडू जाय के आनी दे इम्ति इररिलेवेंट कथा जे से कहि परियो से कोन कहयर अछि एग्जैक्टली द अमाउंट कहयर अछि केबे कहयर अछि बिफोर इट बिकम्स पेएबल एग्जैक्टली पेएबल डेट रो आगरे कहयर अछि हैला एडार केस लो क्वेश्चन दे आसीथिला सेति पे कहूची आउ से कहूची देखो सेकंड पॉइंट ता से कहूची and without having sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person from who he derived his title बुझी पारछ ना नाही कोन कहला से माने जाड भी रिसीव करछ होल्डर इन ड्यू कोर्स बुझो भल से कंफ्यूज हे जिवो नले एडा होची होल्डर एच माने होल्डर एचडीसी माने होल्डर इन ड्यू कोर्स जनगरो किछि रिकवर करबो माने गोटे पर्सन पेएबल अछि पर्सन पेएबल मु कंफ्यूजन नथिबा पे लिखि दउची जो पर्सन पैसा दबो से पर्सन अछि तो का बिहाफ रे होल्डर इन ड्यू कोर्स ताडो पैसा मागुची वेरी गुड होल्डर बिहाफ रे मागुची आ पई मागुची माने होल्डर आड रिकवर करबा कथा ये कोन करछि होल्डर इन ड्यू कोर्स को मझरे इन्वॉल्व करछि हैला तो ए पर्टिकुलर पर्सन जायगा आकु किछि पचरिबो पचरले जदी ए पर्टिकुलर पर्सन वैलिड अछि जेन्युइन अछि तो ये किछि कहयनी ताको पैसा दे देबो जदी ए पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉड अछि तो कार माने बेसी इंपैक्ट पड़िबो होल्डर इन ड्यू कोर्स ऊपर इंपैक्ट पड़िबो ना नहीं एडा को कहउछन कोन डिफेक्टिव टाइटल आ गुड टाइटल माने होल्डर इन ड्यू कोर्स बहुत भल से सफिशिएंट इंफॉर्मेशन धरिगी से कंक्लूड करिवार अछि कि ए पर्टिकुलर पर्सन रो टाइटल डा ठीक अछि ना नहीं इज ही जेन्युइन और नॉट इज ही वैलिड और नॉट बुझिला ना नहीं सेडा केबे ही पारियो तो पेमेंट डेट आसी ताडो आगे आगे तको करियर अछि आउथरे पडेबे स्टेटमेंट ता बुझिबो before the amount mentioned in it became payable and without having sufficient cause to believe that any defect existed in the title kichi defect achi ki title bhitare कार title bhitare of the person from whom he derived his title जे आपको राइट देछि तार सतरे किछि राइट अछि ना नहीं बुझिला ना नहीं से तुम कहि दोछि से भोजेडा भल लागियो टिके जाई पळा आसे तमे कहल हां ये तो कहू मु जाई पळा आसी गला परसे क तमे का तरफ आछो ना मु ता तरफ आछो तो मु तो ताको डाकिनी ले सी ताको आगे डाकिनी तमो कोनडा डाकियो बुझला ना नहीं पोपड़ ही जियो सेडी सो सेमिति आगे तो टाइटल ना ठीक अछि ना सेडा देखियो
तो लेख विदाउट नहीं सॉरी विदाउट नहीं मु सिंपल वर्ड्स लिखोची इफ पेबल टू ऑर्डर द होल्डर इन ड्यू कोर्स ए स्टेटमेंट बहुत इंपोर्टेंट समझते लेख द होल्डर इन ड्यू कोर्स the holder in due course the holder in due course must make sufficient the holder in due course must make sufficient investigation must make sufficient investigation the holder in due course must make sufficient investigation of the title of the person title of the person from whom he is title of the person from whom he is deriving his title बुझी पारला एबे केस लो क्वेश्चन आसले आंसर करि परियो गुटे गुटे डेफिनेशन रु जदी से केस लो क्वेश्चन पचारछि तो केमिति पचारिबो इमति को पचारे इमति नै कि तुम आंसर तो जान न कहि बट सेटा कोन ब्रेक करले जाई यू कैन आंसर डिफरेंस बुझी पारछ ना म कोन कहूछि तो एडा होछ हमरा इंपोर्टेंट एलिमेंट्स ए भीतर तापर देखो होल्डर इन ड्यू कोर्स रे से कोन कहछि हाई कोर्ट रो डिसीजन किछि अछि माने हाई कोर्ट डिसीजन जो क्लास को नाम सो दीस आर रियल लाइफ केस लॉस रियल लाइफ रे किछि केसेस अराइज किछि से पर्टिकुलर प्रोविजन को धरि फर्स्ट थिंग होछि एन एंडोर्सी बिकम्स ए होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर कंसीडरेशन गुडे एंडोर्सी जे भी अछि ही कैन बिकम अ होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर कंसीडरेशन तापर कहछि he can become an endorsee before the amount mentioned in the promissory note becomes payable देखु छ ना एडा होची बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट खाली डेट अछि कि तमे से अमाउंट रिसीव करबो कहतले कोन 30th अगस्त तुमको 2 लाख रुपीस रिसीव करियार अछि तो तमे 29th अगस्त जाई 29th अगस्त से काहा भी कहि परियो कि तमे होल्डर इन ड्यू कोर्स हुआ कहिगिरी बट 30th अगस्त दिन कहि परियोनी इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट बुझिला जो दिन पेएबल ही जाउची से दिन ही पारिबोनी पेएबल हेबा आगो दिन जे ही पारिबो बिफोर इट बिकम्स पेएबल बुझिला होल्डर इन ड्यू कोर्स केबे जे ही पारियो बिफोर इट बिकम्स पेएबल तापर देखो he should have no sufficient cause to believe that an defect existed in the title of the person from whom he has to derive his title as regard to the second condition the promissory note becomes payable either on demand or at maturity एटा भी गुटे इंपोर्टेंट पॉइंट से कोन कहछ देखो promissory note जहाँ भी अच्छी सेटा केबे पेएबल होची ना डिमांड रे भी हे पारे मैच्योरिटी भी हे पारे डिमांड रे भी हे पारे मैच्योरिटी रे भी हे पारे माने promissory note रे कोन हला आगरे गुटे लाइक दीडा पार्टी जे भी थिले तांग भीतर कोऑर्डिनेशन टा ठीक थिला रे से माने बहुत भल से तांके promissory note साइन करले कि 2 इयर्स परे हबो बट मजरे कोन हला झगड़ा हला से कोन 2 इयर्स से जग्योगी नाइ से इमीडिएटली कहला कि से promissory note टा मते ऑन डिमांड आई नीड सम मनी नै से पूरा मनी दरकार सम ऑफ द अमाउंट तो सेडा कोन हला हमर promissory note टा एक्सपायर हला हमर डिमांड रे बट जदि 2 इयर्स जगी कि सेतोळ से पैसा मागी थांदे तो promissory note expired on maturity डिफरेंस बुझुजो तो एडी गोटे पॉइंट ऐड करो होल्डर इन ड्यू कोर्स an endorsee can also become holder in due course for consideration holder in due course for consideration holder in due course for consideration तापर लिखो holder in due course can be appointed
any day can be appointed any day before the can be appointed any day before the amount becomes payable, before the amount becomes payable. promissory note रो मन अछि तमे से promissory note पाखरे के ऐड करि परियो चाहेले promissory note पाखरे ऐड करो कौन अच्छी जे on demand or on maturity जेतलो सेडा पढिबो सेतलो आगे सेडा पढ दबो आउथर अलग रे पढिया दरकार नहीं पॉइंट किछि मिस होबन promissory note जहां भी अछि सेडा can expire on demand or on maturity demand और maturity रो एग्जांपल कहिछि तमे चाहिले से तळे लिखि पारिबो बट दरकार नहीं बुझी पारिबो होल्डर इन ड्यू कोर्स रे किछि डाउट अछि होल्डर इन ड्यू कोर्स रे किछि डाउट अछि कि नहीं तापर देखो difference between holder and holder in due course difference between holder and due course first point hochi holder is entitled in his own name to possess holder is entitled in his own name to kona possess the instrument and amount thereon so please underline own name कौन करिया सी फर्स्ट थिंग होची से possess करिवो सेकंड थिंग होची ता ऊपर इन्वॉल्वमेंट होची कोन अमाउंट रो तापर राइट अछि किछि अमाउंट रिकवर करिवा पई सो फर्स्ट थिंग होची possess करिवार सेकंड थिंग होची अमाउंट रिकवरी तापर कोन देखो होल्डर इन ड्यू कोर्स possesses the instrument for consideration before maturity so possessing the केबे हो before maturity दिस रखि परिबो हैला त राइट बट आर कोन ता पर maturity पर हेले आर अगर सब किछि राइट अछि ना तापर देखो टाइटल ऑफ द होल्डर इज सब्जेक्ट टू द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर टाइटल ऑफ द होल्डर इज सब्जेक्ट टू द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर तो माने से कोन कहछि बेसिकली दीस टू थिंग्स आर सिमिलर आ सेटा सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस था जे ट्रांसफर करछि तार किछि इंपैक्ट पड़ी पारे बट बेसिकली दीस टू थिंग्स आर क्वाइट सिमिलर तापर कोन कहछि होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स अ बेटर टाइटल देन द ट्रांसफरर बुझिलो बेटर टाइटल देन ट्रांसफरर माने कोन तार किछि ना किछि ओनरशिप अछि ना ट्रांसफरर माने के से तो नॉर्मली इनती लेट्स बॉडी दबो सेडा बुझला ना बॉडी दबो ता परे किछि अधिक राइट नै बट आर कोन ये होछि कोन टेंपरेरी ओनर तो से कोन कहछि देखो बेटर टाइटल ही विल गेट देन द ट्रांसफरर देन कहछि होल्डर में रिसीव द इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसीडरेशन obviously holder होछि ओनर से किछि कंसीडरेशन नै कि इंस्ट्रूमेंट रखियोगी नै बट होल्डर इन ड्यू कोर्स कोन ऑलवेज रिसीव्स द इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसीडरेशन ताकि किछि पैसा देकी हमें टेंपरेरी ओनर बनेबा सेडा से कहउछि then holder does not get certain privileges available to the holder in due course बुझला आर किछि प्रिविलेज नै से तो निजे ओनर से कोन प्रिविलेज दबो बट ये कोन अधिक प्रिविलेजेस आर थाउछि अधिक प्रिविलेजेस थाउछि इन द सेंस कोन अधिक प्रिविलेजेस थाउछि माने कोन कंसीडरेशन मिलेबो ताकू बुझला सेडा देला परे ताकू किछि बेनिफिट दबो से रेस्पेक्ट दबो ताकू कि तू कार रे जाई कि धरि कि आसे तो प्रिविलेज दबो ऑब्वियसली ही विल गिव सम इंपोर्टेंस काहेकि से होछि पर्सन जे कि अमाउंट रिकवर करि आया अछि ताकू टिके कोन मालिश करियो क्या लाइक इंप्रेस करियो बुझला होल्डर इन ड्यू कोर्स पूरा सब पॉइंट क्लियर अछि फाइन पेमेंट इन ड्यू कोर्स देखो सेक्शन नंबर 10 payment in due course defines this expression as payment in accordance with the apparent tenor of the instrument in good faith and without negligence to any person in possession thereof under circumstances which do not afford a reasonable ground for believing that he is not entitled to receive payment of the amount therein mentioned mane kon payment in accordance with the apparent tenor
of the instrument in good faith माने कौन generally जहाँ भी अच्छे माने apparent tenor जे बुझे tenor रा meaning बुझो tenor रा meaning बुझना कौन कोई परियो जहाँ भी सेटा सेटा लीज रो जहाँ भी कोच तमे सो बेसिकली इट्स क्वाइट रिलेटेड टू दैट apparent tenor माने होची टेम्पररी जे ये करछ माने ओनरशिप राइट कैरी करिकि रहउची बुझिला तो सेटा से कोन कहू जार गुड फेथ अछि आ किछि नेग्लिजेंस नै से पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस को धरिकी व्हिच डू नॉट अफोर्ड अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट he is not entitled to receive payment of the amount therein mentioned माने से अल्टीमेटली गुटे जिंस कोची पेमेंट जेतलो ड्यू कोर्स रे होची गुटे पर्टिकुलर पर्सन जे कि किछि भी से जिंस नेग्लेक्ट हेइ नथिबो कि लॉ ताकू लॉफुली मना करिवोनी कि पेमेंट करबा पे पेमेंट रिसीव करिया पे जहां भी गुटे पर्टिकुलर पर्सन को हम होल्ड करिके रखिथिबा इन द ड्यू कोर्स बुझी पारछ से गुटे पूरा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज रे से हम सेटा को ब्रेक करिया अब देखो दिस बेसिकली मींस दैट द फॉर्मेट ऑफ द चेक कोन एडा सेम ठीक अछि this basically means that the format of the check has to be in format issued by the drawee and needs to be made and claimed in good faith and by the intended holder of the instrument the meaning बुझु चना एडारो से कहछि ultimate apparent tenor जे भी अछि apparent tenor माने person holds the ownership rights apparently he has the ownership rights तो से कहछि जेतळ को म एडा गोटे डायग्राम रे बुझुस देखो एडा होछि टेम्पररी ओनर किंबा कोन जब टेम्पररी किछि ओनरशिप राइट्स अछि तो से पर्टिकुलर पर्सन कोन जेतलो गोटे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ता से ओनर पर्यंत रीच हबो से ओनर पर्यंत रीच हबो ये टेम्पररी ओनर हे पारियो नाले ओनर हे पारियो डायरेक्टली तीर जे पर्सन को जेतलो सेटा किछि रिसीव होची तो ए ड्यू कोर्स रे जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व हे कि अछंदी से माने को प्रकार हे पारिबेनी से सेटा कहू को प्रकार हे पारिबेनी देखो से कहिछि फर्स्ट थिंग होची गुड फेथ रे से थिबार अछि हला इमति नै कि से विश्वास नथि कि हबो नेग्लिजेंट हेइ नथिबो किछि रीजन नथिबो कि से पर्सन दा पेमेंट रिसीव करिया पे योग्य नै कहिबी तो से कोन कहछ देखो ए जो पेमेंट ए जो पछरे पर्सन नै कि से कोन कहिछि गुड फेथ रहिबार अछि सेकंड थिंग होची कोन सेकंड थिंग कोन कहला एबे गुटे नेग्लिजेंट हेइ नथिबो नॉट नेग्लिजेंट no reason to believe एडा कोन no reason to believe that he is not entitled to receive payment he is not entitled to receive payment हला तो मझरे पेमेंट इन ड्यू कोर्स मझरे जो भी पर्सन रोची से पर्टिकुलर पर्सन ए तीनटा कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट रो ही थिबो से तीगे से कोच बुझिला तमे एग्जांपल चाहेले देखि पारिबो तीनटा जगह जिनस एडी मेंशन हेछि देखो से कहउछि देखो गुड फेथ रे रहइबो नेग्लिजेंस रहइबोनी आ किछि रीजन नाइ कि से लाइक एंटाइटल हे पारिबोनी पेमेंट करिबा पे तो से पर्टिकुलर पर्सन को कोन आमे गोटे ड्यूटी टा देई पारिबा से पर्टिकुलर पेमेंट रो ड्यूटी टा देई पारि बुझिला ना किछि कंफ्यूजन अछि एतरे क्लियर तापर देखो इंस्ट्रूमेंट्स रो टाइप्स एतरे खाली जो पॉइंट कहबी खाली सेतिके का अंडरलाइन करबो काहे कि रिपीटेटिव पॉइंट्स अछि हमरो इंस्ट्रूमेंट्स रे we have अच्छा तमे ना देखि भी कहि परियो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माने कोन हेथिबो ट्राई करो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माने वेरी गुड इंडिया रे फॉरेन माने फॉरेन रे एम्बिगुअस माने कोन promissory note और bill of exchange कहले अछि हो सेडा छाड़ इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड न देखि को इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड ना देखिए को तापरे इंक्वायर्ड स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट तो स्टोरा स्टैम्प मराई थी नहीं हाउ ठीक अछि माने मु एक्चुअली गुटे गेस वर्क करोथली कि जनरली जदी भी हमको सडनली किछि पचार दउछन एग्जाम भितरे तो किमिति हमें फ्रेम करिया तो हमें देखिया हमर गेस केति की करेक्ट होछि भाई हैला सो वी हैव बेसिकली 5 इंस्ट्रूमेंट्स हियर कोन कोन अछि फर्स्ट थिंग होछि इनलैंड तापर आउटलैंड
तापरे होची फॉरेन तापरे कोन एम्बिगुअस लेखो सब एम्बिगुअस तापरे पेएबल ऑन डिमांड पेएबल ऑन डिमांड तापरे इनक्वेट स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट्स तो शॉर्टकट रे लिखु चेरी बुझी पारलो गुटे गुटे वर्ड खाली लेखो इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट drawn instrument drawn or made in India instrument drawn or made in India सेकेंड टा फॉरेन देखो बेसी इंपोर्टेंट से कोची मेड और मेड पेएबल इन इंडिया माने से जिंस रे फॉरेन इन्वॉल्वमेंट ता अछि क्लियरली हम जाना पड़छ बट सेटा पेएबल कोडी होछ इंडिया भीतर लॉजिकल जिंस गुटे भाबो जदी इंडिया रा इंटरफियरेंस भीतर नथियो त हम कोन पे छला इंडियन एक्ट भीतर पडिबो बुझिला ना सर इधर एडी हेगिरी सेडी पेमेंट होथियो माने सेडी हेगिरी एडी पेमेंट होथियो बट सेडी डायरेक्टली कोची कोन मेड और मेड पेएबल made or made payable in India by with some foreign interference which doubt अछि कोन तो सेडी होथियो फाइन थैंक यू sorry for the confusion not drawn or made payable in India खाली पूरा काटनी तमे not drawn सिंपली लिखि दियो पर not drawn or made payable in India तो एडी कोन होची देखो not drawn either draw ही नथियो either made ही नथियो ना made payable ही नथियो जदी draw ही थिबो माने फॉरेन रे तो एडी इंडिया रे छडा draw ही परिबन payable हबो बट जदी एडी payable ही नथियो तो सेडी draw हबो बुझला नै माने एडी गुटे जिंस इन्वॉल्व हिथि सेडी गुटे जिंस इन्वॉल्व हिथि बेसिकली मु कहूची फॉरेन रे गुटे डेलीगेट अछि फॉरेन रे गुटे डेलीगेट अछि जार कि आ सहित ट्रांजैक्शन अछि इंडिया भितरे से तीनटा पॉइंट मेंशन करछि नॉट ड्रॉन मेड और मेड पेएबल इन इंडिया बट देयर इज सम इंटरफेरेंस बिटवीन दीस टू पार्टीज किछि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ये ताकु देला ये ताकु देला मे बी सेटा एडी पेएबल होनी बट सेडी तो पेएबल हबो आगा ये किछि बनै कि दबो आगा बुझला नै तो एडी जदी ड्रॉ होनी तो सेडी ड्रॉ हबो एडी जदी पेएबल होनी तो सेडी पेएबल हबो बट क्लियरली एडी लेखिबो गुटे जिंस कोन कि फॉरेन इंटरफेरेंस अछि इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होय इवन मो कंफ्यूज हेली से वर्ड ता देखि हला सॉरी फॉर दैट जदी एडी लेखिबा आ किछि पॉइंट अली लेखि पारियोगी negotiable instrument used along with foreign interference डायरेक्टली एति की लिखि दे पारियो जल्दी किछि से डेफिनेशन पचाछ तो कंफ्यूजन किछि रहय negotiable instrument used along with foreign interference directly foreign interference अछि and the negotiable instrument we are using it clear सेति की जिंस लिखि देले हला ambiguous रो मीनिंग कोन जानछ ना ambiguous रो मीनिंग होछि uncertainty किंबा confusion ambiguous जिंसडा हम आगरे भी पढथले ambiguity
ambiguous comes from the word ambiguity. ambiguity रो मीनिंग होची unclear और confusing. तो सी एडी कोन कोचे देखो जे भी अछि हमर इंस्ट्रूमेंट रो होल्डर आमे जानछु इंस्ट्रूमेंट रो होल्डर जे भी अछि ही इज द ओनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तो सी कोन सी डिसाइड करबो कि सेडा को मो कोन कोन कंस्टिट्यूट करी प्रॉमिसरी नोट कंस्टिट्यूट करी ना बिल ऑफ एक्सचेंज कंस्टिट्यूट करी. जदि जो पर्सन सहित तार टर्म्स ठीक अच्छी सी कह कि ठीक अच्छे आम प्रॉमिसरी नोट रो इनवॉल्वमेंट करदे चिन्ह परिचय अच्छी. जदि किसी चिन्ह परिचय ना अननोन पर्सन्स अच्छा तो सेटा कौन कंस्टिट्यूट करे बिल ऑफ एक्सचेंज करिवो काहेकि ही नीड्स सम लीगल सपोर्ट. तो एम्बिगुअस रो मीनिंग होची द होल्डर shall construe or decide holder shall construe or decide the instrument to be a promissory note, instrument to be a promissory note or bills of exchange, promissory note or bills of exchange. Payable on demand माने कौन? Excuse me. Payable on demand माने किसी टाइम पीरियड से नथियो जेतोळे से मागे सुतोळ दब. So no specified maturity period, no specified maturity period, but needs to be paid on demand किंबा whenever demanded. कहीं हमर गुटे ये अछि कि जोड़ा से लिखिथिबो डेफिनेशन रे पचारथिबो से वर्ड्स हम यूज करि परिया. प्रोफेशनल एग्जाम्स रे मन रखिबो कि जो वर्ड से मेंशन करछि हमको तार अल्टरनेटिव सिनोनिम की जहां भी लिखिबार अछि बुझले सेम वर्ड्स हम यूज करि पारे. तो एडी कोन करिया नो स्पेसिफाइड मैच्योरिटी पीरियड बट नीड्स टू बी पेड व्हेनेवर डिमांडेड लिखि पारे व्हेनेवर डिमांडेड. क्लियर. लास्ट होछि इंक्वायर्ड स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट्स आर मीनिंग कोन where one person signs and delivers to another a paper stamped in accordance with the law relating to negotiable instruments. से कौन कोची गुटे person sign करिवो deliver करिवो to another a paper stamped in accordance with the law relating to negotiable instrument. तो first point कौन कोची एडी एडा बहुत बड़डा हैला ब्रेक करिकि लेखिबो. first point से कौन कोची assigned stamped paper drawn with reference to the respective law prevailing in the country, the respective law prevailing in the country बुझिला. एटा होची फर्स्ट पॉइंट जोटा किसी कोन सब किछि प्रोविजन उडाला लिखिबो. प्रोविजन गुडा तो कोन लिखिबो को प्रोविजन ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को धरगी मु से चिंचला मेंशन करनी ना. ठीक अछि. एडी खाली एनआई लिखि दियो नॉट इंपोर्टेंट नाही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैला. एनआई लॉ रिलेटिंग टू व्हाट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. आ से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माने जो लॉ डा अछि सेडा पर्टिकुलरली से टाइम पीरियड पे कोन प्रिवेलिंग होथिबो एडा होची की पॉइंट एडी सेडा होची की पॉइंट. माने कोन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 हमें पढ़छेबे 1881 ना या 1881 क्लियर. बट जदी बा जेतलो से डील करछि सेतलो किछि अमेंडमेंट आसिला हमहु किछि अमेंडमेंट आसिला तो हमें को जिंस मेंशन करबा सेडा ना पर्टिकुलरली जो अमेंडमेंट आछि से अमेंडमेंट हमें मेंशन करबे से अमेंडमेंट मेंशन करबे ना कि जोना हमें पढ़ी के अछि. क्लियर.
तो सी कौन कहूँ प्रिवेल जोड़ा हूँ कंट्री भितर से पर्टिकुलर टाइम पीरियड दैट थिंग हैज टू बी मेंशन फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट रे से कौन कहूँ देख कहीं सेटा या for the time being in force in India either wholly blank or having written thereon an incomplete negotiable instrument he thereby gives prima facie authority to the holder thereof to make or complete as the case may be upon it a negotiable instrument for any amount specified therein and not exceeding the amount covered by the stamp. तो ये लिखा कि the person giving the simplest words रे मुझे लिखो चेड़ा the person giving the stamp paper may assign it blank totally blank से दे पारियो और partially filled by the holder thereof having the amount within the limit mentioned in stamp बुझला ए पॉइंट से बुझिया कहला माने बुझिया चाहू छ सेडी जब लंबा करी के देनी की से कोन कहू जानछ ना जो पर्सन दबो सी लॉ तो मेंशन कर दबो कि आमे एति की इंस्ट्रूमेंट डील करि परिया एति की मैच्योरिटी पीरियड एति की तमे डिमांड दबार अछि की पर्टिकुलर होल्डर बियरर जे भी सब जिंस कहि दबो से जोडा लॉ अछि लिखि दबो स्टैम्प ता थिबो सेतरे स्टैम्प वैल्यू माने कोन से पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट केते वैल्यू छी हमको प्रूफ हिसाब रे काम करि परियो मे बी मु जो इंस्ट्रूमेंट ता ताको देली से 10000 रुपीस रो हेतिबो तो आम भितर जो डीलिंग ता नै कि सेटा 10000 भितर आगर रखल अछि 9999 भितर आगर रहय अछि बुझिला से कोन कहू छी 10000 भी एग्जैक्ट नै पारियोनी ता भितर रहय अछि सर बुझिला ना नै तो इंस्ट्रूमेंट रो वैल्यू केति की कैरी आउट करछि केति की स्टैम्प रो वैल्यू ता रखछि से भितर से कोन करर अछि से अमाउंट ता रखर अछि एंड जो इंस्ट्रूमेंट से असाइन करछि दैट वी मे गिव ब्लैंक माने टोटली से ब्लैंक हिसाब रे दे पारे ओनाली किछि जिंस पार्शियली फिल करिकरी होल्डर को दे पारे मुझे एडा होची हमर कोन इंक्वायर्ड स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरा पक्का आस करे तापर कोन कहू देखा The person so signing shall be liable upon such instrument in capacity in which he signed the same to any holder in due course for such amount provided that no person other than the holder in due course shall recover from the person delivering the instrument anything in excess of the amount intended by him to be paid thereunder माने कौन लिखि दियो थर्ड पॉइंट सर्च पेड़ा the person entitled to receive the person entitled to receive the payment के हे परियो ब्रैकेट रे लिखो होल्डर और के holder in due course the person entitled to receive the payment can recover only the amount specified and nothing in excess of that ହେଲା
इंपोर्टेंट सबडू मैच्योरिटी विषय ऑलरेडी हमें पढ़ देइछु खाली जो जिंस कोई सेना अंडरलाइन करो Section 22 provides that the date of maturity of the instruments, the maturity of a promissory note or a bill of exchange, the date at which it falls due. माने कौन जो डेट रे तुमको पैसा देवर डेट आसे से डेट होची कौन हमर maturity. If the promissory note or bill of exchange does not express to be payable on demand at sight or on presentment, the maturity for such cases is the third day on which it is expressed to be payable. This is the important point here. ए पूरा paragraph रे खाली एतिकी जिंस होची हमर important. से कोच देखो जदी किछि मैच्योरिटी डेट मेंशन हेनी रे हला 2 मंथ्स ले कोथिला 2 मंथ्स किछि मेंशन हेनी तो सेडा कोन हबो जानछ ना ऑन डिमांड हे पारियो जदी मु जेतळ मागली सेतळ दबो ऑन साइट हे पारियो माने मु जेतळ तम दुसियली तम संगे संगे आनी कि देदार अछि हला एट साइट हे पारियो और एट ऑन प्रेजेंटमेंट नले मु इंदी ठक किना पेपर टा रखले जाय कि तम पैसा दबो से फिल्मी स्टाइल रे बुझि पाला ना नहीं तो से कौन कहूची जदि बा किछि डेट मेंशन हेनी तो तीनटा जिंस हेई पारियो ऑन डिमांड हेई पारियो नाले कोन एट साइट हेई पारियो नाले एट प्रेजेंटमेंट हेई पारियो मु मागी तमु नाले मु दुसु मते संगे संगे पैसा दे देबो नाले कोन पेपर टा देले दबो क्लियर से कहूची देखो गुटे केस टा एम्ति हेतिला जोडा कि से कहूची दिस सेक्शन यूज द टर्म यूज्ड इन दिस सेक्शन कैन नॉट अप्लाई टू अ प्रॉमिसरी नोट पेएबल ऑन डिमांड एडा भी इंपोर्टेंट मार्क कर से कौन कहूछ देखो जो टर्म टा यूज हेनी कि मैच्योरिटी डेट टा जहां भी अछि सेडा मैच्योरिटी टा प्रॉमिसरी नोट पेएबल ऑन डिमांड को अप्लाई होनी से ए सेक्शन रो ए पर्टिकुलर प्रोविजन टा से एक्सक्लूड कर देल सेति गेल हैला तापर से कहूछ फॉर कैलकुलेटिंग मैच्योरिटी ऑफ बिल और नोट पेएबल so many months after date or site in calculating the date at which a promissory note bill of exchange made payable at a stated number of months after date or after site or after certain event is at maturity एडा किमिति कैलकुलेट हबो कहूछ तुम ऑलरेडी अकाउंटिंग रे पढ़थिबो से कोन कहूछ देखो द पीरियड स्टेटेड शैल बी हेल्ड टू बी टर्मिनेट ऑन द डे ऑफ द मंथ व्हिच करेस्पॉन्ड्स विद द डे ऑन व्हिच द इंस्ट्रूमेंट इज डेटेड माने से कोन कहूछ देखो जेतलो गुटे डेट टा क्लियर करले डेट टा पळा आथला सेडा तो द पीरियड स्टेटेड शैल बी हेल्ड टू टर्मिनेट केतलो टर्मिनेट हबो केतलो को एंड हबो ऑन द डे ऑफ द मंथ से मंथ भितरे गुटे एमिति डे व्हिच करेस्पॉन्ड्स विद द day on which the instrument is dated तो एडा का पे एप्लीकेबल होबो जानछना से जे कहला February 30 कि कोन माने लीप ईयर हेले जे कि February 30 आछि हमको बुझ पारला ना February 30 आछि ना 29 आछि सॉरी 29 आछि तो जदी इमति किछि कंस्ट्रू हे जाउछि तांकने सेडा नोटिस कर लेनी हैला 3 मंथ्स आगे काट दी छथि 29 को 29 कर दी छथि तो एमति हेले कोन हबो तांको भितर म्यूचुअल डिस्कशन हबो म्यूचुअल डिस्कशन हेगिरी तांके आ गुटे मंथ 29 आडको सेडा आनिबो हैला मो जदी थिबी सेडा February 30 लेके presented for acceptance or site noted for non-acceptance or protested for non-acceptance the event happens where the instrument is a bill of exchange made payable at a stated number of months किछि number of months जदी मेंशन हे जेछि after site माने कोन देखो either तमे 3 months ले लिखि पारिबो नले कहियो कि मु इंडिया आसला पर 3 मास दिरा जरा डिफरेंस अछि ना नहीं 3 मास आजुले तमे कहि पारे नले कहि पारे कोन मु इंडिया आसला पर 3 मास कहि after site 3 months तो इधर एमती हबो and has been accepted for honor with the day on which it was so accepted तो एमिति सब circumstances रे कोन हबो if the month in which the period would terminate has no corresponding day the period shall be held to terminate on the last day of the such month तो मु जो एग्जांपल एबे कहि दिनी कि 29 तो जदी तांको भितर म्यूचुअल डिस्कशन जहां भी अछि ध्यान से सुनो लास्ट पॉइंट जो म्यूचुअल डिस्कशन लाइक माने कंक्लूड हलानी माने गुटे पर्टिकुलर पॉइंट तांके अराइव करि पारलेनी कंक्लूजन को तो तांके कोन करिए करेस्पोंडिंग डे किछि होनी कहले तांको भितर गुटे म्यूचुअल एग्रीमेंट रे गुटे डे रा डिसाइड हबो केति केसेस भितर ए सब जा केसेस भितर तो तांको भितर जो डेट टा एग्री हबो से डेट अलगो कोन हम तांके सेना मैच्योरिटी कंसीडर करो तुमको ए पूरा पॉइंट पूरा पैराग्राफ खाली गुटे जिंस एग्जाम रे पचार चंदी काई सेना पढला केते राखुछ तमको जो पॉइंट ता कहिथिले मो पेज नंबर 127 रे सेकंड लाइन if the promissory note or bill of exchange देखो the promissory note or bill of exchange does not express to be payable on demand at site or presentment the maturity for such case is the third day on which it is expressed to be payable बुझला एडा गुटा रे तुम पचरा होची सबड मन रहला किछि डाउट अछि मैच्योरिटी भितरे ठीक अछि थैंक यू